हाँ जी, मित्र भाइयों, आइए सीधे चलते हैं विशाल त्रिवेदी की ओर। जैसा कि आपने सुना, 10 इयर्स प्लस इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, चार्टर लाइफ अंडरराइटर, इंश्योरेंस एडवाइजर फॉर ऑटो, होम एंड लाइफ इंश्योरेंस। तुरंत ही कॉल करें विशाल त्रिवेदी को 647-767-9852, 647-767-9852। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस में। Thank you, Jatin ji, and it's always my pleasure to be with you. Regards to all our listeners. बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आज आपसे पूछना चाहेंगे जी। कि हमारे श्रोताओं को बताएं अबाउट द मॉर्गेज इंश्योरेंस। जी। और इसके साथ साथ एक और बात कहना चाहेंगे कि ये भी बताएं इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस फॉर स्पाउस, हाउसवाइफ, उनके लिए क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए जतिन जी, again, when we start with any talk show, the whole purpose of talk show is to give information and अपनी कम्युनिटी को बताना कि एक लाइफ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, मॉर्गेज इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है. Being in insurance industry 10 years plus now, I always believe that it's my moral obligation to my community to give them so much information that they make right decision, regardless they buy from anybody. So mortgage insurance, again, it's one of those insurance which we have to have it. The reason is क्योंकि आज हमारी एक इतनी बड़ी liability जो मकान है, average houses price $800,000 to $1 million टोरंटो में है, और जो एवरेज मॉर्गेज है $500,000 to $1 million है. अगर ये मॉर्गेज कवर्ड नहीं है और गॉड फॉरबिड फैमिली में डेथ हो जाती है, या पर्सन इज नॉट एबल टू देयर इज अ क्रिटिकल इलनेस और देयर इज अ प्रॉब्लम, व्हाट हैपेंस नाउ? आपके बिल्स चालू रहेंगे, you will have to pay your bills, you will have to pay your expenses, you will have to pay all your whatever the liabilities are there monthly. So mortgage insurance जो है, गॉड फॉरबिड अगर डेथ होती है तो मॉर्गेज पे करती है. और मॉर्गेज इंश्योरेंस एक एजेंट और एक एडवाइजर से लेने कंपेयर टू अ बैंक, इट ऑलवेज एडवाइजेबल. बट डिस्क्लेमर यही है कि आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के प्रोडक्ट खराब है, बट देयर आर बेटर ऑप्शंस अवेलेबल. मॉर्गेज इंश्योरेंस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जब आप लेते हैं प्रॉपर लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू, तो एक पूरी मॉर्गेज कवर होती है और आपकी फैमिली बेनिफिशियरी होती है, न कि बैंक होता है. आपकी अंडरराइटिंग अपफ्रंट होती है, तो आपको बाद में गॉड फॉरबिड कुछ होता है तो बाद में अंडरराइटिंग नहीं होती. मेजॉरिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हेन दे डू द एप्लीकेशन, वो जब आपसे करते हैं तो आपका अंडरराइटिंग हेल्थ वगैरह वो उस समय चेक नहीं करते हैं, बाद में करते हैं. मेजॉरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी विल डू इट अपफ्रंट बिकॉज दे आर प्योर लाइफ इंश्योरेंस. सही कहा. गोइंग बैक, आई ऑलवेज बिलीव दैट व्हेन यू हैव इंश्योरेंस, a lot of time I come across with this notion कि विशाल सिर्फ मुझे इंश्योरेंस दे दो, मेरी वाइफ को इंश्योरेंस मत दो, बिकॉज आई डोंट वांट एनी मनी फ्रॉम ऐसा वैसा, और मुझे नहीं चाहिए कोई पैसा अपनी वाइफ के ऊपर से. अच्छा, मैं अपने सारे लिसनर्स को एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है तो आपकी वाइफ और आपके स्पाउस के दोनों के ऊपर होना चाहिए. द रीज़न ये कि मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल अपना देता हूँ. माई चाइल्ड इज 6 year old and 9 year old. मेरा बेटा कृष्णा 9 साल का है, श्रेया 6 साल की होने वाली है. God forbid something happens to my wife today, and if she is a housewife, she worth $100,000 a year. Being a housewife, देखिए आपकी जो spouse है, it worth that much of amount approximately. The reason is, if my wife is not there, what happens? I don't have any insurance, God forbid, spouse passed away. My child would need babysitter or nanny, which I have to hire $35,000 to $40,000. If I don't have any family member, why I should bother my family member? Second thing is, am I going to work or no? I get sentimental. I say, you know what, I'm going to spend more time with my kids. So my loss of income will be there too, because I'm not able to work and I will give more time to my kids. So the point is, if my wife has $1 million and I have $1 million insurance and my need is only $500,000 to $1 million, something happens, we both will compensate $1 million to each other. wonderful. And the reason is, हम हमेशा ये सोचते हैं कि हाउस वाइफ वर्थ नथिंग, एंड दिस इज, आई वुड लाइक टू करेक्ट एवरीबॉडी दैट हाउस वाइफ वर्थ मोर देन अ नॉर्मल पर्सन हु इज अर्निंग. बिकॉज अगर उनके लेबर को हम सब्स्टिट्यूट करें पैसे से तो $1,00,000 के ऊपर होता है. बहुत खूब. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव इंश्योरेंस ऑन योर स्पाउसेस. एंड प्लीज, फीमेल का इंश्योरेंस कनाडा में बहुत सस्ता है. यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो द प्राइसेस, because they live longer. When you live longer, the cost is lower. But disability is expensive because you live longer, company have to pay more. But the point is, life insurance for female is very low. Please cover your spouses. It's good to have it because
any action you take, it will determine your future tomorrow, and our future is in our hand. Whatever decision we take today, we don't want to be in a situation where we come back, oh Vishal, I wish I would have it, oh Vishal, I wish I would have known it. ये wish हमें हटाना है, and we have to take the right decision for our family. वंडरफुल। तो महेंद्र भाई आप तुरंत ही विशाल त्रिवेदी को कॉल करें 6477679852 6477679852 या विजिट करें vishaltrivedi.ca। विशाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you, Jatin ji.